Good morning, Padvi. Good morning, Rupam. Good morning. We will start in a bit. Some more people are gonna join us. Sure, that's definitely fine. Yeah. Am I audible? Yes, Paritosh, you are audible. I think he is muted. On mute. Yes. Yeah. Hi, Paritosh. Yes. Uh, Sorry. Thank you so much, Rupam, for joining us today. Thank you, everyone, for joining us. Rupam Gupta is our speaker for today. Rupam Gupta is a social innovator and serial entrepreneur, and presently he is the chief executive officer of Arnav GreenTech Innovations Private Limited, that is situated in Mumbai. And he firmly believes in sustainability through meaningful social innovations. He has innovated various acclaimed technologies and breakthrough like world's first solar-powered sanitary napkin incinerator for providing ecological, sustainable sanitary waste disposal management. He also holds 5 Indian patents for his various social innovations. And beside this, he is also a consultant and mentor to a lot of technology startups, wherein he enables them to go from zero to critical mass by helping them with technology, branding, and marketing. By profession, he has a heart of an engineer, being an alumni of IIT Allahabad, and a soul of a manager, being an alumni of IIM Lucknow. He also founded 4 successful ventures till now in early years of his career like Empazar Telematics Laboratories, Alligator Technologies, MyVet, and Top Hospitals. And furthermore, with 11 long years of hands-on experience in design and technology and successful market implementation. So thank you so much, Rupam, for joining us today. Now the stage is all yours. I request you to please take the session ahead. Okay. Thanks, Paritosh, for lovely introduction. And it's really amazing to interact with all you guys. And most of them are the faculties of AIC JKLU. And looking forward for a wonderful session and an interactive session. So today, I will be briefing you about the business fit and the market fit and the value proposition for the business. And during our entire conversation, if you feel like to know something more about, just feel free to buzz me anytime, and I will be happy to take the queries. So you don't need to wait till the end for your question and answers. Whenever, since it's an interactive session, so I think whenever you feel like any doubt, I will be happy to help and add a value to the knowledge. So as we understand, so may I just know like these mostly are the faculties or they are students as well? So Paritosh? it's a faculty from other institutes as well. It's not only Okay. from yeah. Okay. That's great. That's great. So being a faculty, I think you all have much bigger responsibility to play with because most of faculty, you already have done excelled in your academic life, and now you are teaching students. And startup culture is something which has recently come up, and to guide them and mentor them in ever changing business dynamics, it becomes very imperative that we as a faculty, we also understand what are the terms and things in the business and the startup culture so that we can happily and effectively mentor our startups and budding entrepreneurs. Because what I believe is the best of the startup ideas come up from the student's mind. And thing is, we all, though we have a great experience, we have excelled in our life, in our sectors, but then
the thing is, we are still not connected with the recent problems and the business opportunity which exists in the market. Because as a students, your students, they are the young and teenager people. They have entirely different set of problems, and they have different set of solutions which they want to monetize and turn it into an opportunity through their startup ideas. So, but whatever the thing is, whatever the age group, whatever the profile, the business fundamentals of any business remains the same. And the business fundamentals of every business, you see, either if you are selling a salt or you're selling food online through delivery startup or anything, the business fundamentals can be analyzed with a few of the common matrices, that is the business lean model canvas. Because nowadays, like in each category, there are so many companies, there are so many solutions. Everyone is competing against each other. And the thing is, in such a hyper competitive environment, it's very difficult to get everyone noticed. The same thing happens in even wherever we are working. Like if we are working in a university, there are so many faculties. If it is a product, then there are similar kind of competing product. So where to get it noticed, we have to find out what are our unique selling propositions. And this is useful not just for the business, but it is also useful for even our personal life and the professional life. So the basic fundamental and the structure in even our the personal life, professional life, and in the business remains the same. So the value proposition, what value we offer to our clients and to our professional environment. So this is, so I will give you a one simple example. Like there are so many products that are solving same purpose. Like if we want a car is a mode of transport from point A to point B. But whereas the typical profile of a customer of a Maruti will be very different from a Mahindra or to a Jaguar. Each product serves same purpose. The similar thing happens with a mobile phone. A mobile phone has got all the calling feature, WhatsApp, everything is available in the phone. But still, there are some companies which charge a premium, and there are companies which they offer at a cheaper price. So before someone starts any business, any startup idea or something, we have to first clearly identify what is the value proposition and who will be user of our product. Without analyzing this thing, you cannot build a successful product, because based on the statistics, around 70% of the new product introduced in any market goes unnoticed. So why this happens? See, if some company is bringing a product, you see all the successful companies have also a failure list of products. Even there are many products from the tech giant like Google, they failed in the market. You see, Orkut has failed. Then there is the Google Hangouts, uh, it has failed. So even the bigger companies as well, they have their fair share of failures. Just like today, we are interacting in the Zoom platform. But Microsoft is one of the biggest tech giants of the world. But still, nobody use their Microsoft Teams. So there must be something which went wrong, even with the biggest of the companies. Do you agree with me on this part? That today we are on the Zoom call, not from Microsoft Teams. So, Yes, I agree on that. yes, Yes, so we perfectly agree on that. yes. So that's why, uh, like, even the biggest companies with the biggest of the resources, they fail to excel in certain areas.
And why this failure happens? It is just because they fail to realize what is the right product market fit. So even if you are the biggest tech giant with the biggest of the resources, marketing budget, this never ensures any kind of a success. And by the way, Zoom is a very small company when compared to Microsoft. Even like Google Meet, the initial product from the Google, it was a big failure. So at times, so how to find out what is the right value proposition for any product in the market? So for this, there is a very uh, structured manner where we can find out the value proposition. And while like uh, you people as a faculty, whenever you are interacting with any student who have come up with the idea and he wants to do any startup, so you can structurally and effectively mentor that student. Because what happens is the students typically they are very energetic people, and they have once an idea comes to their mind, they are super excited with the idea. But uh, idea alone never makes any business successful. To make it successful as a startup, you have to think in the metrics of the business. So in the metrics of the business, there are the fundamental key things, which is the business lean model canvas. So I will just share my screen so that I can guide you how to get it done. Just a second. So are you able to see my screen? Is it visible? Yes, sir. Yes. So no matter if you're selling salt or no matter you're selling a high-tech software or anything, we have to all this is called a DNA of any business. That is a lean model canvas. So a lean model canvas is one thing, like because you as a faculty, you have to mentor all these students. So idea can be anything. It can be very interesting, it can be very innovative, or it can be very simple idea which is already in the market. Like if somebody wants to sell shoes online or a Jaipuri ki kurti online, then there is nothing new. But still, the fundamental of any traditional business or a modern business, this can be categorized into one single page. And this is a business lean model canvas. So any product, it to become a successful, it has to first thing is it has to solve a problem. And us to solve a problem, or the problem should be a real-time problem. You see, why the problem is very important. Identifying the real problem is important. You see, nowadays, like in the shopping sites, there are so many shopping sites online. Flipkart, Amazon, Myntra, Shopify, Meesho. There are so many shopping sites. Similarly, when there was a boom in the online food technology space, there was so many companies. We know Swiggy, Zomato, but before that there was Ola also serving food. There was Uber Eats. There was also serving food, and similarly there were many other smaller companies who have come up to serve the food. But the basic idea is आदमी दिन में कितनी बार खाना खाता है? It's only 3 times a day. And having 30 companies offering the same solution where even you are not creating the food, it has to be come up from the nearest restaurant, then obviously the market is not big enough to support 30 other companies, right?
And similarly, like in the even in the shopping space, like when the Flipkart, Amazon came, there was other companies. Do you remember Shop Clues? 4 5 years back, it was a one of the big company, Shop Clues. Similarly, there was so many other companies. They have also come up at that time. So whenever the market is booming, there are so many other people, so many companies trying to offer similar kind of a product. But why some companies succeed and some companies fail? Because of the common problem, that is, like, are they are going to solve a right problem? So whenever like you are consulting with any of your startup and you are mentoring them, you have to first ask them, with your ideas, are you solving a real problem? Yes or no? So, and the problem should be at least three things. Like if somebody is trying to create a food tech based company, then what is the clear cut problem? Okay, is getting a delivery on time food is a problem, or availability of restaurant. So if a founder or startup founder is unable to find the right set of three problems which are genuine in nature, then he's not solving any kind of a real issue. See, ultimately, if you're not trying to, if any startup or if any solution is not solving a real problem, then it is obviously going to fail. The problem should be very genuine in nature. It's just like the thing is why electric vehicle is successful. The common problem is keep fuel prices is soaring very high. This is one problem. The second problem is nowadays the cities are getting congested. This is again a problem. So whenever you are consulting and mentoring any startup, you have to first find out whether this problem is real or not, and at least the set of the top three problems which any solution is going to solve. This is an important part. Then what is in the second grid, you find a solution. So we can analyze the problem, but is the solutions which uh, that startup has thought about, or the anything, it is solving a right kind of a problem. You see, like every day we brush our teeth, right? And we use toothbrush like Oral-B or Colgate. But there are motorized electric toothbrushes available in the market. But how many of us has actually used that electric toothbrush? I'm just asking. How many of us has used that electric toothbrush? I think very few of us has used that electric toothbrush, because that problem which they are trying to solve is not a big problem enough. In fact, replacement of a battery of electric toothbrush is a bigger problem for me. So any day, if some startup offers a oral or dental hygiene solution through a electric toothbrush, can never be a big market. Do you agree with this? So similarly, the problem has to be very genuine in nature. If somebody is trying to solve the problem with non-genuine solution, it's just like a add-on solution. A simple example is an electric toothbrush. It is not going to succeed in the market. Similarly, the vacuum cleaner market in our household has never become big. Why every middle class individual, they must be having a vacuum cleaner at their house, but this vacuum cleaner is not used very frequently, unlike in the Western world. Because when I was in Europe, vacuum cleaning was a thing which is to be used at least twice in a month, because you had carpet all over your house.
But in India, vacuum cleaner, though the households they have a vacuum cleaner, but still it is not used on the daily basis or a monthly or weekly basis. Why? Because though the India has a very large population, we have a dusty environment, but our household and the interiors is something which is can be easily solved by a mop. That's why you see decline in the vacuum cleaner market. If you just go back on the time, 10 year back, there used to be a Eureka folk guy who used to come to your house and give a demo about his vacuum cleaner, Eureka folk's vacuum cleaner. Nowadays, you don't see that kind of thing happening now. Do you agree with this? Can you recollect over those old days? Yes. Ma'am, you were trying to say something. Sir, can I ask something? Yes, definitely. सर मुझे पूछना था कि जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, अगर हमको प्रोडक्ट को सेल करना है, और अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह हमको बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे गए हैं, लेकिन जैसे अगर मैं क्या कहते हैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को सेल करना है अपना प्रोडक्ट, तो क्या कहते हैं बहुत सारे जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस प्लेटफॉर्म की होती हैं कि क्या कहते हैं रिटर्न पॉलिसी है या कुछ है। रिटर्न पॉलिसी में भी क्या कहते हैं कभी कभार ज्यादा टाइम होता है या कुछ टाइम है, उसके रिलेटेड जो भी हमारे मतलब टैक्स इश्यूज भी होते हैं, कभी कभार पेमेंट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, कभी कभार ये होता है कि अगर प्रोडक्ट मंगाया हमने सही भी भेजा है, जब भी रिटर्न हो रहा है विदाउट एनी इशू, तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके। सो आपका जो रिटर्न पॉलिसी, इसका आंसर मैं सबसे लास्ट में दूं जो आपके क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो एक जेन्युइन क्वेश्चन है स्टार्टअप से रिलेटेड, पर मैं आपको उसको एंड में करता हूँ। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं। ओके सर। यस। आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका स्टार्टअप? नहीं सर, मैं स्टूडेंट ही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। सो देखिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस जस्ट आफ्टर द सेशन। मैं एग्जैक्टली अभी, क्योंकि आप का जो क्वेश्चन है वो फ्लिपकार्ट अमेजन से रिलेटेड, ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड है, उसमें आप नया सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं कोई, आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं एंड में देता हूँ। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि कोई स्टार्टअप अपना सोल्यूशंस और प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करे। So, may I know your name, please? I will just write it down. What's your good name, please? सर पुनीत। Puneet. Okay, Puneet. So, Puneet, I am going to answer this question just on the end of my session, right? So, meanwhile, is there any doubt with यस this सर। part? Okay. सर Yes. मेरे को क्या कहते हैं आप मतलब साइट कैसे बेटर हो सकती है उससे रिलेटेड ही पूछ रहे हैं ना, मतलब बता रहे थे। Okay. तो सर मेरे को Site. ये पूछना था, जैसे क्या कहते हैं आजकल वो हमारे वो प्रोडक्ट्स आ गए जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स पर डिलीवर करने के लिए कंट्री डिलाइट, ऑटिफाई, मैनी अदर एप्स मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, और Yes. मनी टाइम्स क्या कहते हैं वो हमको क्या कहते हैं डिस्काउंट्स पे देते हैं क्या कहते हैं, और सही प्रोडक्ट भी डिलीवर करते हैं। लेकिन जैसे हमारे Yes. फ्रूट वेंडर्स वगैरह आते हैं, वो कभी कभार मार्केट में मतलब सस्ता बेचे होते हैं, वो तो चलता रहता है, कभी हमने ज्यादा बेचा उनने ज्यादा बेचा, लेकिन हम बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो हम अपना प्रोडक्ट एक तरीके से शो नहीं कर सकते, एक तरीके से लैक ऑफ टेक्टाइल एक्सपीरियंस है ना, वो क्या कहते हैं आ रहे हैं। अब जैसे हम कंज्यूमर है, मैं ही हूँ, अगर मेरे को कोई भी फ्रूट लेना हो या वेजिटेबल लेना हो, तो मैं उसको मतलब क्या कहते हैं छू के स्मेल करके ट्राई करूंगा, तो Yeah. उसमें आजकल वेंडर्स हो रहा है जैसे कि वो चीप अगर क्या कहते हैं सस्ते में बेचना है, जैसे अगर कंज्यूमर बाय नहीं कर रहा, तो वो पेस्टिसाइड या आजकल मार्केट में नए नए केमिकल आ रहे हैं वो यूज करते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, या कोई वेबसाइट ऐसे कैसे क्रिएट कर सकता है जो इंश्योर करे कि जो आप प्रोडक्ट वेंडर से खरीदे जो लोकल मार्केट में है,
वो आपको केमिकल्स और से मतलब चीज रिलेटेड भेजेगा, और हम जो आपको भेजेंगे महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन चीज भेजेंगे विदाउट यूजिंग एनी Okay, पेस्टिसाइड और अदर थिंग्स। okay, okay. As a idea, it's perfectly good. बट देखिए, आप इसको एज अ स्टार्टअप अगर करेंगे, तभी आपको एक बिजनेस फिट अपने आइडिया को करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बिजनेस फिट के लिए ही मैं ये आपको कैनवास के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। एज अ आइडिया, यस, देयर आर कंपनीज लाइक कंट्री डिलाइट से लेके जियो मार्ट, एवरीबडी बिग बास्केट, दे आर ऑफरिंग सेम काइंड ऑफ ऑन delivery platform. But the thing is, no matter how big these companies are, there is always a thing like a regional leadership. Just like we know, on the road, सबसे ज्यादा टाटा का ट्रक बिकता है, बट इस ऐसी सिमिलरली इन टू व्हीलर यू हैव हीरो विच सेल्स लार्जेस्ट इन द नंबर। बट साउथ इंडिया में अगर आप जाके देखेंगे, तो वहां पे आपको अशोक लीलैंड के ट्रक्स दिखेंगे। सिमिलरली टू व्हीलर्स में टीवीएस दिखेगा। So even the biggest of the company, India is such a big market. Even the largest of the companies are not number one in every market. तो वहाँ पे regional leadership का रोल होता है. So if you are trying to create a company with a food delivery startup, you can fight against the biggest of the companies, Big Basket to GeoMart and Delight, Country Delight, but you cannot target pan India basis like what they are doing. You have to focus on the regional leadership. जैसे अगर आप जयपुर बेस्ड हैं, या फिर कोई ऐसी सिटी आप पकड़िए जहाँ पे इनके solutions available नहीं है. It's just like you take a city like Ajmer or Kishangarh or somewhere, whatever the place, where they don't have a warehouse, or where they don't have developed a supply chain. So if you are offering a solution in such kind of a market, then the good chances will be your company might get acquired by these companies. This just a simple example is, Walmart is the biggest retailer of product. So physical goods and everything, Walmart is the number one player across the world. And Flipkart was acquired by Walmart. Do you guys know? Flipkart got acquired by Walmart. नो सर। What and what is Flipkart? It is nothing. Just a website only, ना. So Walmart जो दुनिया का नंबर वन रिटेलर है, क्या वो एक अच्छा अपना वेबसाइट नहीं बना सकता क्या? बना सर सकता है, फ्लिपकार्ट के बट पास ऑलरेडी कंज्यूमर्स है ना, इसलिए उसको जरूरत नहीं है। yes. So that's why they acquired. So if your startup, even if you are not doing very unique thing, but if you have a customer and the traction of a user with you, then your startup can be acquired. And the money in the startup business is more made while you sell your companies. आपको अपना कंपनी को चला के इतना पैसा नहीं जितना कमाया जाता है, जितना एक बार में अपनी कंपनी विद अ सेट ऑफ द कस्टमर्स उसको आप सेल कर देते हैं, यू मेक मोर मनी विद दैट. So that's why the merger and acquisitions always happens in the startup space. And why doing a startup is a very important thing is, uh, fundamentally, we just saw Rakesh Jhunjhunwala. He died few days back only. So he was a very renowned stock broker, and he was king of the bullish market. Similarly, we all have heard the name of Warren Buffett. Have you heard the name of Warren Buffett? So even यस सर। the so these are the very renowned people, very rich people, but still you cannot make grow your money on a sustainable basis more than 14 to 15% per annum. कोई भी पूरी दुनिया के अंदर 15% पर एनम के बेसिस से ज्यादा आप पैसे को ग्रो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑलरेडी proved in the theory of economics. But whereas in the startup, the thing is कि
a startup grows very fast, and in startup it is technically possible to increase your valuation as 5x or 10x within a very small period of time, say in the period of 1 year, 2 years, or 5 years period. This type of wealth growth cannot be achieved by a traditional business. That's why, to make the fastest money, startup is the only solution to make money. Because in a startup, what happens is the profits may not become high. The यूनिट इकोनॉमिक्स स्टार्टअप ही एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप लॉस में भी होते हुए भी स्टिल योर वैल्यू कमांड्स इन मिलियंस एंड बिलियंस. And do you know what can be a reason behind it? No, sir. Yes. Okay. So why startups always becomes valuable, unlike the other traditional business? See, the simple reason is we all live in certain kind of a colony, right? तो हमारे घर के पास में एक किराने की दुकान पक्का होगी जहाँ से हम लोग अपना ग्रोसरी लेते हैं. So वहां से और दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड सिंस years and years. हमारे फादर्स भी वहीं पे लेते थे, हम भी वहीं पे सामान लेते हैं. Similarly, you have the Reliance Fresh and all, और बिग बाजार जो बंद हो गया, हम वहां से भी सामान लेते थे. These are the grocery stores. So यहाँ पे कभी भी साइंटिफिक ढंग से ये कैलकुलेट नहीं किया गया था कि एक कस्टमर जो हमने एक्वायर किया है, इफ यू बिकम अ कस्टमर ऑफ से नियरेस्ट अग्रवाल किराना स्टोर और समथिंग, वहां पे कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता था कि से इफ योर नेम इज पुनीत एंड और उमेश, and if you have become a customer of Agarwal Kirana store or any Kirana store, and over the period of time, as you grow up, आप मेरे यहाँ से 1 लाख का या 2 लाख का सामान खरीदोगे, and the value of your customer is this much. ये साइंटिफिकली ढंग से कभी कैलकुलेट किया ही नहीं जाता था. So इसलिए उनकी वैल्यू नहीं होती थी. But whereas in a startup, if you are selling the thing online, there's a particular metrics called lifetime value of customer, LTV. So उस LTV से कंपनी को पता रहता है कि if you have say doing a shopping with Flipkart or Amazon, and they take you a critical statistics like what's your age profile, they know कि if you are age 20 right now, so next 40 years if you become a customer with us, so over the 40 years ये ठीक है, हर साल एटलीस्ट हमारे से 10,000 का सामान शॉपिंग करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे. So over the 40 years, he will be buying a worth of say 4 lakh rupees of a product with me. And that's why a customer like Umesh, Puneet, or Aishi, or Janvi signing into a e-commerce platform like Flipkart or Amazon or any e-commerce platform, these companies will perfectly tell you that I have acquired these 4 or 5 customers or n number of customers, their age profile is this, and in future they are going to do a purchase of this much value on my platform. That's why my value should be in millions and billions. ये ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता था. Are you understanding the point? The same Yes, thing sir. happens with Huggies diaper. कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है, so ideally he should be wearing a diaper. और वो अगर डाइपर पहनता है, so at least मतलब 1.5-2 साल तक का बच्चा डाइपर पहनता है, so per day at least 3 से 4 डाइपर्स की जरूरत पड़ती होगी. बट हगीज अपने को ये क्लेम नहीं करवा पाता कि आई हैव गॉट दिस मच नंबर ऑफ अ कस्टमर और ये अगले 2 साल तक हम मेरे डाइपर्स पहनने वाले हैं. ओवर द पीरियड ऑफ 2 years they will be using at least 10,000 or 20,000 diapers throughout that period of 1 year or 2 years. वो हगीज क्लेम नहीं कर पाता है बिकॉज दे डोंट हैव द डेटा विद देम. बिकॉज आप हगीज तो आप दुकान से खरीद लेते हैं डाइपर, ठीक है, so they cannot track a customer. So that's why
even though these companies have a customer, but still these companies don't become valuable. Whereas in a startup, you acquire a customer and you have the profile of a customer and you claim कि ये फ्यूचर में मेरे टाइम साथ में जितने टाइम भी जुड़ा हुआ है, ये मेरे से इतने वैल्यू का ट्रांजैक्शन करेगा, एंड दैट्स व्हाई माय वैल्यूएशन is higher. So that's why if you do a startup, your valuations become very, very high, which cannot be done by a traditional business practices which is prevailing. क्योंकि आप लोग भी जब भी सुनते होंगे स्टार्टअप की इतनी वैल्यूएशंस हो गई, इतनी वैल्यूएशंस हो गई, समटाइम्स वी आल्सो फाइंड कि व्हाई दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल फिगर इज देयर. इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि these companies, startup companies, are clearly able to communicate that what is the future value of the customer. If I have acquired a customer, मैंने एक कस्टमर को मेरे साथ में जोड़ गया, तो वो फ्यूचर में मेरे साथ में इस वैल्यू ऑफ ट्रेड करेगा, इसलिए मेरी वैल्यू है. आप देखिए बिग बाजार कितना बड़ा ब्रांड था, बिग बाजार के इतने सारे फिजिकल स्टोर होने के बाद में भी बिग बाजार बंद हो गया, बिग बाजार को किसी ने एक्वायर नहीं किया. और कोई भी डिलीवरी ग्रोसरी कंपनी जो ऑनलाइन मीडियम में है, उसकी वैल्यूएशन हमेशा बिग बाजार से ज्यादा रही है. सो दैट इज व्हाई अ स्टार्टअप बिकम्स वेरी वैल्यूएबल. सो आई होप आपको ये चीज थोड़ी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग थी कि व्हाई अ स्टार्टअप इज वैल्यूएबल, नॉट अ Yes, sir. ट्रेडिशनल बिजनेस. यस. Sir, I have to ask you one question, one to two questions also. या श्योर. सर जैसे आजकल लीडिंग में ज्यादातर स्विगी एंड जोमेटो है. आप देखते आ रहे हैं जब से स्विगी मतलब ओपन हुआ है, तो क्या कहते हैं स्विगी बहुत सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है. एज अ कंज्यूमर वो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, मैं तो उससे ही लूंगा. जोमेटो प्रोवाइड करता है लेकिन वो इतना नहीं करता जितना स्विगी करता है. तो सर अगर हम स्टार्टअप करना चाहे ऐसे किसी क्या कहते हैं लाइन में, तो सर कैसे करें? जैसे स्विगी इतने डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है, हर रोज मैं 60% और क्या कहते हैं डिलीवरी फ्री, और 399 की मेंबरशिप होती है 3 महीने की, और डिलीवरी फ्री है. और अगर आपको कोई प्रोडक्ट अपना जैसे मेरे घर से अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट पार्सल वगैरह करवाना है, तो उस पे वो मतलब कुछ भी फेयर होगा उस पे 10% ऑफ भी दिया है, ऐसी सब चीजें हैं. तो सर मैं सस्टेन कैसे करेगा स्टार्टअप? अगेंस्ट स्विगी एंड जोमेटो. जैसे स्विगी एंड जोमेटो, स्विगी जब से खुला है क्या कहता है बहुत सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है. अभी भी अगर हम ऐप खोल के देख ले तो 60% ऑफ के मैनी रेस्टोरेंट्स होंगे, वरना ऑफर आ यस. रहे होंगे, कोई ना कोई कार्ड पे आ रहा होगा, कुछ पे आ रहा होगा. अगर हम 399 की 3 मंथ्स की मेंबरशिप ले लेते हैं तो हमको अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी है. इंस्टामार्ट पे ग्रोसरी वगैरह है उन पे भी डिस्काउंट 5 to 10%, 15%, और उन पे भी फ्री डिलीवरी है चाहे दिन में कितनी भी बार मंगवाएं. तो सर यस. ऐसे जोमेटो मतलब चल रही है कंपनी, लेकिन फिर भी जहाँ तक है स्विगी के पास कस्टमर ज्यादा है होंगे, क्योंकि एज अ कंज्यूमर मैं तो उसके पास जाऊंगा जो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेगा. तो सर अगर हमें इसी लाइन में कोई स्टार्टअप करना हो तो सर कैसे करें? इसमें स्विगी जैसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स बहुत कम रेट पे देता है. देखिए एक स्टार्टअप का इसमें हो सकता है. देखिए अगर इफ यू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड फूड डिलीवरी कंपनी which delivers into educational campus, जैसे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो मोस्टली सिटी से बहुत दूर हैं. So I will just take example like say Manipal has का कैंपस सिटी से दूर है, या फिर इक्फाई हैज अ कैंपस, एमिटी. सो इन सब के कैंपस सिटी से दूर है. So if you create a food delivery startup company which typically focus on the educational campuses only, and you offer food
till mid late night, then I think you have a market where you're not directly competing against Swiggy and you have a big market. So देखिए आप डायरेक्टली स्विगी जोमेटो से compete नहीं कर सकते, बट अगर आपने कोई एक नीश सेगमेंट पकड़ लिया, सो उस सेगमेंट पे अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, एंड हियर योर टारगेट कस्टमर्स आर नॉट द फैमिलीज, बट हियर योर टारगेट कस्टमर्स बिकम्स द हॉस्टलर्स, because hostelers generally they feel very hungry during late night time, and the campuses are quite far off from the city area. So there if you deliver food, then I think you get a clear cut customer base and you get a distinct edge. So आपका यूनिक प्रपोजिशन उस केस के अंदर डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम स्विगी जोमेटो, देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड द सक्सेस बिकम्स वेरी हाई. दिस कैन बी वन थिंग, बिकॉज आप देखेंगे जितने भी नए आपके एजुकेशनल कैंपसेस हैं, चाहे आईआईटीज के भी हों, वो सारे बहुत दूर हैं. और इफ यू वांट टू गेट इनटू फूड डिलीवरी कंपनीज, यू कैन थिंक ऑफ अ फूड डिलीवरी कंपनी जो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर आपका फूड सप्लाई करें. सो इफ यू हैपन टू सी इंडस्ट्रियल एरियाज, सो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर शिफ्ट टाइमिंग्स आर वेरी इरेटिक. सो और वहां पे फूड डिलीवरी कंपनीज इतने इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाती. So if you just target on such kind of place, then I think it is successful. So that can be one thing. Any other question? सर एक और था, हाँ सर याद आ गया सर। जैसे मतलब स्टार्टअप है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत मतलब एक्सपेंसिव हो गई है। अगर हम इंस्टाग्राम या Yes. यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाएं तो मे बी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एडिटिंग वगैरह खुद करें। लेकिन अगर हमारे अकाउंट्स पे इतने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स नहीं है तो मे बी हमको कांटेक्ट करना पड़े कुछ यूट्यूब क्रिएटर से, और वो क्या कहते हैं मे बी 50,000 1 लाख जितना भी अमाउंट है अकॉर्डिंग टू देयर सब्सक्राइबर्स दे कैन चार्ज। और अगर हम न्यूज़पेपर में भी अपना क्या कहते हैं कॉलम देना चाहे आजकल वो भी बहुत महंगा हो रहा है। और अगर हम क्या कहते हैं टीवी पे भी करें सर वो भी महंगा है। तो सर कौन सी मतलब ऐसे मेथड है जिससे हम वो क्या कहते हैं उसमें मतलब चीप पड़े हमको मार्केटिंग। सी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि the marketing costs, yes, I agree. Nowadays, digital marketing has become more expensive than the traditional way of marketing. But marketing का एक best तरीका ये होता है affiliate marketing. So when you have a customer and he shares his review to other fellow people, then you get more number of the people and user in your platform, जिसके लिए आपने कोई marketing के लिए पैसा effectively खर्च कम किया है. But the influencer marketing in Facebook and Instagram has become nowadays expensive thing. So, but the marketing point of view में ऐसा है कि you have to clearly identify which product you are into. तो अगर आप मेरे को बताओ कि product क्या है, so I can guide you which kind of a marketing will work out for you. सर जैसे अभी हमने बात करी थी कि जैसे मैं अपना वो उससे मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही हो गया, मतलब जैसे कंट्री डिलाइट वगैरह करते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट हो गया, या मे बी मैं कोई स्टार्टअप जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे अपना ये ओला उबर की गाड़ी होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मतलब वो पैसेंजर्स को ले जाने वाला ट्रेवलिंग वगैरह का काम होगा वो। या मे बी कोई भी साइट हो सकती है फूड डिलीवरी की हो सकती है कि जैसे अब स्विगी जोमेटो या अब डॉट पे भी आ रहा है मार्केट में क्या कहते हैं ये इससे रिलेटेड। तो इसमें अगर मेरे को अपने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं अपनी साइट को फेमस करना हो कि कस्टमर्स आए, क्योंकि अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर कस्टमर्स आएंगे कैसे। Yes. सी देखिए मार्केटिंग के अंदर कैसा है कि अगर आप एग्जैक्टली फूड के स्पेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो फूड के स्पेस देखिए मार्केटिंग हमेशा एक प्रोडक्ट के ओरिएंटेड होती है कि आपका प्रोडक्ट
क्या है उसके अराउंड मार्केटिंग डिसाइड होनी है. So you see a marketing approach for any product differ category to category. So अगर आपका जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर राइडिंग के अंदर है, so उस केस के अंदर आपका मार्केटिंग का तरीका जो होना है वो इट कैन बी समथिंग लाइक आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके यूजर्स सबसे ज्यादा कौन है. देखिए ओला और उबर के अंदर आपको डू यू फील देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर और डू यू फील द पीपल आर द सेम? व्हाट डू यू थिंक? सर डिफरेंस होगा क्योंकि मे समटाइम्स नॉट समटाइम्स मैनी टाइम्स ओला चार्ज हायर देन उबर एंड if we start any electric vehicle company for riding, then it will cost less amount to us and to customers also. यस. यू सी देखिए मार्केटिंग के अंदर क्या है कि अगर आप हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो डिसाइड होती है वो उसके यूजर बेस पे होती है. देखिए सी आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रैपिडो. रैपिडो हैज एंटर्ड टू अ सिमिलर स्पेस अगेंस्ट ओला एंड उबर, and Rapido has experienced a phenomenal rise against the biggest of the tech giants. Uber is worldwide number one. ओला इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है, दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट, बट स्टिल रैपिडो टू व्हीलर के अंदर अगर हमें सबसे सस्ती अगर कहीं पे अगर हमें बाइक टैक्सी चाहिए वी यूज रैपिडो, नॉट ओला और उबर बाइक. डू यू एग्री विद दिस? सर बट मैंने रैपिडो पे समटाइम पहले चेक करा था प्ले स्टोर पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमको पता चला था. तो उस पे जैसे मैं न्यू यूजर हूँ तो मैं सबसे पहले रेटिंग ही चेक करूंगा डाउनलोड करने से पहले या यूज करने से पहले कि क्या रेटिंग्स रिव्यूज आए हैं. तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहते हैं मेरे को कहीं जाना है तो रैपिडो यूज करूँ, लेकिन रेटिंग क्या कहते हैं मतलब उस वक्त शायद 4 या 4.1 समथिंग होगी और रिव्यूज में पढ़ रहा था क्योंकि रेटिंग से ज्यादा रिव्यूज पे भरोसा करा जाता है. तो रिव्यूज में पढ़ रहा था तो 5, 10, 15 मैंने क्या कहते हैं नेगेटिव रिव्यूज पढ़े जो लाइन टू लाइन मेरे को आते गए. तो उसके बाद मैंने कहा कि जब रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो फिर यूज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हाय. उसके बाद यूज ही नहीं. हेलो. अब ओला उबर है उन्होंने भी वो हेलो. उसमें बाइक वगैरह स्टार्ट कर दी है जिससे क्या कहते हैं हम ट्रैवल कर सकते हैं. अब ओला उबर जो स्टार्टिंग से यूज कर रहा होगा उसका एक मतलब ट्रस्ट है, क्योंकि रैपिडो पे अगर नेगेटिव रिव्यूज उसने कस्टमर पढ़ेंगे और फिर क्या कहता है ओला उबर भी अपनी बाइक पर ऐसे हमको प्रोवाइड करेंगे वो सर्विस, मे बी महंगी हो थोड़ी सी, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यूज होंगे और सस्ती दे रही है तो कंज्यूमर्स में हेजिटेट टू यूज द ऐप एंड देयर Hello, सर्विसेज. Puneet. Puneet, I'm sorry to interrupt in between. So let's do one thing. आपको मैं personally connect करा दूंगा रूपम के साथ so that you can ask the questions, right? Right now, Rupam, requesting you to please move ahead with the session. You know, Yeah, sure, sure. at the end of the session, we can connect again for this. Yeah, definitely. Definitely, that will keep the things structured. Yes. Yeah. ओके सर. So, सर अभी मेरा मतलब क्या कहते हैं पेपर होने वाला है तो 1:30 बजे कनेक्ट कर सकते हैं? Sure. उसके बाद I will get in contact with you and I will connect you. No issues. ओके सर. you take my number from Paritosh and feel free to contact me anytime. Yeah. सर आई डोंट Sure. हैव परितोष सर नंबर. Sharing my number. No issues. Okay, I will put my number on the chat box. Is that ओके fine? Works. यस सर. So I have shared my number on the chat box, and I have also shared my mail ID. यस सर. थैंक यू. Just feel free to connect. ओके सर. Sure. Right. So we can move ahead with the session. Rupam. So right. So while while thinking about a startup, see, this is one page which has to keep in mind to while we are thinking about any solution. So first thing is the problem, कि आप the which problem which your solution is going to solve.
Then when you have identified the problem statement, right, then what's the solutions? Is the solutions which you are offering is exactly going to solve the problem? I just gave you example of electric toothbrush. तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, बट आपने सोल्यूशन बना दिया इलेक्ट्रिक टूथब्रश. Whether it is that electric toothbrush is going to solve that problem effectively, yes or no? This you have to do an analysis. So at least you have to talk to at least 10 or more potential customer that I have come up with this idea. Do you think this is worthwhile? Yes or no? जब आपका प्रॉब्लम और आपका सॉल्यूशंस बिल्कुल सही है, so we move to a third point. What is the unique value proposition? A unique value proposition is something कि जिसके अंदर आप कोई भी solutions बनाया है. So there may be other companies as well who are offering similar kind of a solution. But what is something unique about you? A unique about you may be your product and services are easy to use. Either it is very affordable to buy or the consumer delight is very good. The simple example is Google has got a search engine. Yahoo भी सर्च करता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज भी सर्च करता है. आप कुछ भी रिजल्ट डालेंगे वो सर्च बताते हैं. But the unique value proposition for a Google search is they give you the results in very clean manner. अगर आप गूगल सर्च के बाद में आप याहू सर्च पे जाओगे तो आपको लगेगा कि ये रिजल्ट्स कितने अटपटे ढंग से आ रहे हैं. So a unique value proposition always tells you clearly that yes, these solutions offered by the others are the same, but why my solution is unique is because of this thing that I have got 3 or 4 set of a feature which is not available with my current competitors. Then another factor is what is the unfair advantage? Unfair advantage is something if you have say patent of your product, then it's an unfair advantage. Unfair advantage is something कि वो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता. तो ये एक अनफेयर एडवांटेज एक किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो जाता है. Then another thing is कि whenever you are thinking of any product and solutions, you have to think about a consumer segment. Consumer segment के अंदर ऐसा है कि we have come up with the idea, but who is the target customer segment? Consumer target segment के अंदर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि my customer age should be this and this. वो particularly इस persona का है कि what is his monthly income levels are, what kind of a family, whether he's a nuclear family or no. Just like somebody was talking about food delivery startup and the vegetable delivery among this panel. So in typical size, the consumer segment will be for particularly food delivery company will be a people which is tech savvy more than 20 years age. Obviously, a 60 or 70-year-old grandmother is not going to be a target customer, right? So consumer segments also we have to analyze. So even if you are looking for a organic food and vegetables, so organic food and vegetables will be obviously going to be priced higher than the normal food and vegetables. Agree on this? मंडी की प्राइस से तो आप ज्यादा ही प्राइस में ऑर्गेनिक बेचेंगे. So there the consumer segment will be at least a upper middle class, at least with a monthly income level of 40 to 50,000 rupees. So जब तक आप consumer segment को ढंग से identify नहीं होगा, तब तक आपको target customer भी नहीं मिलेगा. Then when you have identified the consumer segments and all, then you have to come up with a cost structure. किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? सो कॉस्ट स्ट्रक्चर इज समथिंग इज कि एक कस्टमर को हम जैसे लाइक somebody was saying कि digital marketing has become so expensive. You see, acquiring a customer also requires a cost in marketing budget. ये कॉस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है. एक प्रोडक्ट का ओरिजिनल कॉस्ट इज
again a cost structure. So जब तक हम any startup is not able to understand what is the cost involved with the product, तब तक आप उसकी pricing नहीं decide कर सकते हैं. So you see why all these fashion brands, uh, you have seen कि end of the season sale हर brand में लगती है, end of the summer sale, end of the winter season sale, and you see all the products are selling at the discount of 60-70%, at least 50% discounts में तो होते ही हैं. Agree on this? Why they are selling in discount? आपका जारा का क्लोथ जो 2000 रुपीज का है वो 50% डिस्काउंट के बाद में 1000 रुपीज का हो रहा है. Why? Because they want to clear the stock. Because inventory cost of a product जो अगले साल यूज होने वाला है उसकी inventory cost is going to be higher. So while deciding the cost structure, जब उन्होंने अपना original price 2000 रखा है, so at that time they have calculated कि if we are making say 10,000 pieces of this particular pattern and style of a cloth, so उसमें से we should be able to sell at least 50-60% at the full MRP. उसके बाद हमें डिस्काउंट्स करके इतना स्टॉक्स को लिक्विडेट करना है, एंड इवन आफ्टर द डिस्काउंट्स देयर विल बी एटलीस्ट 5 or 10% ऑफ स्टॉक वो इवन डिस्काउंट के बाद में भी नहीं बिक पाएगा. तो उस कॉस्ट को भी आपको यू हैव टू टेक इनटू द अकाउंट. देन यू रीच टू अ कॉस्ट स्ट्रक्चर. ये हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट एक जो सब्जी वाला जो होता है जो ठेले में सब्जी बेचता है वो मोहाना मंडी से सब्जियां बहुत सस्ते में लेके आता है. So he may be getting tomatoes at the price of 10 rupees a kg from Mohana Mandi. When he's selling, at the end of the day, he knows that in morning he has got a stock of say 100 kg of tomato. He should be able to sell 80 kg of tomato at full price. 10 रुपए का खरीदा तो वो 20 रुपए kg का बेच रहा होगा. But at the night time, the leftover or damaged pieces, he might be selling at 5 rupees or 10 rupees a kg. तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर कैलकुलेट का पार्ट होता है. So without reaching to so many of the startups, they fail to reach to find the right cost structure, because they always think कि cost structure is the product cost and the marketing cost, but they fail to calculate what is the cost of the product damages, what is the cost of the unsold inventory. जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन के केस के अंदर जो भी रिटर्न पार्सल का भी कॉस्ट होता है. हम बहुत बार प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और उसके बाद में हम उसको या तो कलेक्ट नहीं करते हैं या रिटर्न कर देते हैं, तो वो भी तो एक कॉस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिए. एग्री ऑन दिस? So these thing has to be always calculated, otherwise your product unit economics becomes wrong. So these are the set of the things which is very much required to find out the right value of a product. So whenever you are thinking about the startup, you have to fill this thing and take a help of your faculty or any member or any startup expert. He should be able to guide you over this part. Then you will be able to know what is the right value proposition of your product. जब तक हम if we cannot offer a right value to our customer, no product is going to be successful. You see, in the salt market, there was a वो इस लड़के के मतलब कि बिल्कुल नंबर आ जाता क्योंकि मैंने क्षेत्र में कॉल कर दी और तो एडमिटेड लिस्ट कंगी वहां देख वहां पे नहीं आ रहा. मैं मिस कर रहा उस मतलब नहीं आया. क्या है परसेंटेज क्या है? कौन सी क्लास में कौन सी कैटेगरी में? ओबीसी में. yes, ओबीसी में 78.40 है कट ऑफ. अभी वो तो इलेक्शन के बाद अगर आएगी तो आएगी, अभी कुछ नहीं आएगा, अभी नहीं हुआ एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है ना? yes ma'am. अभी बेटा मैं नहीं ले रही बगैर डॉक्यूमेंट्स. कौन सी क्लास के हो? ये फर्स्ट संगीता रोटला मैडम को दे दो या वो मेल चुके स्टाफ में पूछ लो. फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट देने कोई ना कोई मिल जाएगा.
excuse me, ma'am. Can you just mute yourself? Yes. Are we good to go? Yeah. So I hope like you guys are clear with the business model canvas. So before somebody is thinking of a startup, they have to fill this business model canvas. And this model canvas, if you are able to fill it, then I think you are clear with the product and the solution which is in your mind. And while any college-based or a university-based startup is thinking about a business model canvas, they have to think, take the help of the faculty or anyone as a mentor. He will be able to guide whether you have filled it right or wrong. And if somebody is thinking of any startup, at least you can reach out to me. I have shared my number and mail ID. So I will be able to judge whether you have done it right and wrong. No matter what business you are into, this is something which you have to do it. So a value proposition for any product will be, what is the product service? After using the product, whether we are offered any kind of a solution or the gain to a customer, then the product is valuable. You see, any product, how it is valuable is something. If your product is in the market and tomorrow वो product market में नहीं है, तो कस्टमर की लाइफ में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, like people are unable to live with your service, then your product is very valuable. Just like WhatsApp or Facebook. Can you imagine living with WhatsApp, Facebook, or Instagram for even a single day? We can't live. Then the product is valuable. But if your product has got a 10 numbers of alternate solution, it's just like if today Flipkart is not there, but if I want to make a purchase of a smartphone, I can go to Amazon. So उस केस के अंदर मेरा वैल्यू प्रपोजिशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है. So a value proposition has to be clearly identified with the filling of these matrices. So I think these are a little technical sides of the discussion, but if you want, I can also elaborate more over this. How to fill it based on your feedback. What do you think? If you want more clarity over the subject, I can give you. So anyways, like, this was about the business model canvas, and these, ये सारी चीजें बहुत important होती है किसी भी business को आप जब strategize कर रहे हैं. ये सारी चीज किसी भी strategy का part है. No matter आप क्या sell कर रहे हैं, क्या product है, but basic आपको ये sheet fill करनी ही पड़ेगी. बिना इसके clarity nahi aayegi over the subject. So if somebody is selling something online or somebody is thinking of a startup, या फिर कोई जैसे स्कूल यूनिवर्सिटी में कोई हार्डवेयर बेस्ड कोई स्टार्टअप बना रहा है, कोई रोबोट बना रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहता है, बट द बिजनेस कैनवस इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस. अदरवाइज क्लैरिटी ही नहीं आएगी किसी भी फाउंडर को कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. बिकॉज द थिंग इज लाइक इट्स लाइक एनी बिल्डिंग. जैसे आपका कैंपस का भी बिल्डिंग है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी बार बना है, तो पीपल विल से कि ओनली वन टाइम. बट नो, इट इज बीन क्रेडिट वाइज. एक बार वो पेपर में आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, फिर उसके बाद में रियल में इम्प्लीमेंट हुआ होगा. तो बिजनेस मॉडल कैनवस इज ऑल्सो आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग ऑफ एनी स्टार्टअप आइडिया. इफ यू गेट दिस राइट, देन आप जब उसको रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो सही बनेगा. इफ यू गेट दिस रॉन्ग, तो अगर आपने बिना
किसी भी चीज का आपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं बनाया और आप डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रह गई। इसलिए ये कोई भी बिल्डिंग होती है उसको पहले नक्शे में बनाया जाता है। सो अ बिजनेस लीन मॉडल इज एग्जैक्टली लाइक अ आर्किटेक्ट ड्राइंग। If we get it right, then we implement it. Because in any business, if you do any mistake, then the mistake is very costly. So at least वो costly mistake ना हो, इसलिए ये business lean model canvas use किया जाता है. So that was about the business canvas. Now I will speak about the value proposition. कि value proposition किसी भी business का क्या होता है. So on the value proposition, there are it just we take an example of salt. In salt, देखिए in the market there was so many salt in the market. आशीर्वाद का भी नमक आया था from ITC, then the Captain Cook from Hindustan Lever. Why Tata Salt survived in the market? Because नमक का काम तो हम ऐसा तो नमक खाते नहीं, हम तो सब्जी में डालते हैं. नमक is not something like a pizza or a biscuit which we eat. सॉल्ट इज समथिंग जो बैकएंड के अंदर यूज होता है. सो अगर मैं आपको टाटा नमक खिला रहा हूँ या फिर आशीर्वाद नमक खिला रहा हूँ, आप नमक खा के नहीं बता सकते कि ये किसका नमक है. एंड नमक के अंदर बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी इफेक्टिवली यूज नहीं होती है. सो बट स्टिल व्हाई टाटा सॉल्ट इज able to maintain a leadership over so many years of time. This is because of a value proposition. So value proposition को create करने के लिए we have to do a calculations where we have to find out why it is a valuable. You see how Tata Salt become a valuable brand. Then the other brand is Tata Salt sell its the salt is something कि वो आपको महीने में 1 किलो से ज्यादा एक फैमिली में नहीं यूज होना. So the typical replenishment rate of salt is very low. But whereas एक दुकानदार को 10 तरह के सॉल्ट को अपनी दुकान में रखेगा तो उसका शेल्फ स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो वैल्यू प्रपोजिशन वाइज व्हाई टाटा सॉल्ट बिकम्स वेरी सक्सेसफुल इज दुकानदारों ने अदर सॉल्ट रखा ही नहीं. एंड सिंस एवरी सॉल्ट कंपनी इज ऑफरिंग 10% margin on the salt, so 10% of 10 rupees salt of a competing brand and 10% margin of 20 rupees. तो वहां पे 1 रुपए कमाता है, यहाँ पे 2 रुपए कमा रहा है दुकानदार. So it became successful because दुकानदारों ने उसके competing brand का salt रखा ही नहीं. So unfair advantage in any business is if your product is available across the stock और उसको अगर आपका competing brand नहीं दिखता है, so you are again a successful. So in the business market fit of any product, there are lot of the things which has to be taken into account. So this was the technical knowledge from my side. I can go more about the technical discussion, but I think now I am open towards the question and answer round. If you have any question and answer, I will be very happy to answer it. So the house is open for your question and answers. I'll be happy to answer all your questions. So any doubt, just like Puneet was having a doubt, any other questions you have? Any questions from the faculty side? How to mentor a startup from faculty side? So is there any questions or is there any doubt? I will be happy to answer it. Guys, you have to be little enthusiastic about the things. So, yes, any other doubts you have? Right. So the session is over. So if someone has any doubt, you can ask right now.
Yeah. You can write them Yeah. so we can just read it out for you. Yes. Sure. So I've shared my number as well. So, like, if somebody has a doubt, then directly reach to me. And meanwhile, any of the startups, they want to connect to me, just feel free to connect. And a request to all the faculty member, like, you can also share the list of your startups with us, and we shall be happy to guide them and mentor them. Right. Thank you so much, Rupam, for joining in. Thank you so much. And, Okay. it is a Sure. great session. This session. Thank you so much, everyone, for joining in. Okay. Yeah. Thank you. Welcome.